Hello students, I am back again with my video lecture, and this is the last lecture on the topic Indian economics development, and this is lecture number 4. Do listen previous lectures so that you can be updated कि हमने last lectures में क्या-क्या पढ़ा था. One more announcement, I have created my Telegram channel. I am posting my videos regularly on Telegram channel. You can DM me on Instagram or on Facebook if you need any online class. Online classes are also available with the help of Zoom. Do subscribe my YouTube channel for getting more updates on economics, accounts, and PST. Recently, I'm posting economics lectures. Soon, I will be posting with the PST as well as accounts. So let us start with the today's lecture. Now, beta, ये जो आपका topic है, today's topic is GST and demonetization. ये बेटा ये दो topic, that is GST as well as demonetization. ये दोनों ही टॉपिक रिसेंटली ही particularly CBSE ने इंसर्ट किए हैं इन दी सिलेबस and these are the very current topic that what is demonetization and what is GST. You should know being a commerce student that GST क्या है and demonetization क्या हुआ था उसका impact इंडिया में क्यों आया, what was the reason, you should know as a commerce student. Now let us start with first GST. What does GST? It was a biggest tax reform. First of all, हमारी country में ऐसा tax reform इसी बार when it came in the year, I am just revealing the year also. It came in the year on 30th June 2017. अब देखिए demonetization की डेट याद रखिएगा. That was 8 November 2016, and after demonetization only this particular taxation was introduced. That was on 30th June 2017 और 1st July से ये implement होना शुरू हो गया था. Now, first of all, during a special midnight session in the parliament, ये implement हुआ. इसका impact क्या था? What was the impact? Let us understand first the meaning of GST and then the 101 Constitution, that is the 101th Constitution Amendment Act, received assent of the President of India on 8 September 2016. हमको assent मिल गया था लेकिन applicability बेटा 2017 में गई थी, याद रखना. Amendment introduced क्या बोला गया था कि Article 246A in the Constitution cross empowering Parliament and Legislature of State to make the laws with the reference of goods and service tax. यहाँ पे गवर्नमेंट को राइट दिया गया कि भैया आप सारे टैक्सेशन आप किसके अंदर लेके आ सकते हैं, जीएसटी के अंदर. जो पहले कस्टम ड्यूटी थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो सर्विस टैक्स था, वो सब एक ही पर्टिकुलरली अम्ब्रेला के अंदर आ गए. दैट इज टर्म्ड एज जीएसटी. देयर इज वन नेशन वन टैक्स. अब हम इजीली बोल सकते हैं अपने लिए दैट वी आर अ वन नेशन एंड ओनली वन टैक्स इज एप्लीकेबल. नाउ व्हाट वर द फीचर्स? फर्स्ट, state government will continue to levy weight on alcohol and liquor for human consumption. बेटा इस पे वैट लगेगा ताकि इन पे particularly tobacco products will attract both GST and central excise duty ताकि उनका प्रोडक्शन क्या हो सके, कम से कम हो सके. ये अपने दिमाग में बिठा के रखना कि भैया वैट इंप्लीमेंट हो गया, किस पे इंप्लीमेंट हो गया, एल्कोहल और लिकर प्रोडक्ट्स पे. एंड सेकेंडली जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पे पर्टिकुलरली एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो. Then we have 6 standard rates under. There is a very common question: 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, and 28%. These are the 6 standard rates under GST. आपकी 6 standard rates कौन-कौन से बेटा? I've told you. First is 0%, then is 3%, then is 5, then 12, 18, and 28. It has replaced a large number of taxes on goods and service levied on production, sale of good, or provision of service like VAT and sales tax. So total 5 petroleum products have been kept out of GST. अभी जो बहुत सारे products हैं, maybe that is the slide which I have made currently. So they are out of GST nomenclature. So basically बेटा इस स्लाइड में अपन क्या क्या याद कर सकते हैं. एक तो फर्स्ट इज हाउ मेनी रेट्स ऑफ जीएसटी इज देयर. देयर आर 6 रेट्स एज आई टोल्ड यू एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. उसके बाद आपके पास ये था कि टबैको एंड लिकर प्रोडक्ट्स के लिए. सो अल्कोहल लिकर प्रोडक्ट्स में अभी वैट लगता है
एंड सेकेंडली टबैको पे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगेगी. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन व्हिच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Now, moving on to next. Here I have given a short form, that is SUIT. S is for state government, U is for under GST, I is it has replaced, and T is for total 5 petroleum products, जिनको GST के nomenclature से बाहर रख दिया गया. अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, एडवांटेजेस क्या दिए जीएसटी ने सरकार को. पहला, जीडीपी ग्रोथ हुई. सेकंड, एडवांटेज टू द कस्टमर. Next is ease in filing. Next is transparency. So here one short form, B is for boost in GDP, E is for advantage to customers. Okay, just a nomenclature. E को आप advantage में ले सकते हो. Then here just it is being there. Ease in filing यहाँ आएगा बेटा, और ये जो A है ये advantage यहाँ आएगा. Just corrected. यहाँ पे E is for ease in filing, that are not properly replaced, and A is advantage to customers, and T is your transparency. Transparency बहुत आ गई जब GST का implementation शुरू हुआ. Now coming to demonetization बेटा. तो demonetization का मतलब क्या था, सबने देखा था. Two largest denomination notes कौन कौन से बेटा, 500 and 1000 notes were being seized as a legal tender with immediate effect. It led to 86% of money in circulation invalid. मतलब उस वक्त 86% of money was in the form of 500 and 1000 old notes, जिसका पूरा लीगल टेंडर खत्म कर दिया. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अन अनाउंसमेंट. कब अनाउंसमेंट आया था जीएसटी का? इट वाज ऑन नवंबर 8, 2016. ये याद रखना. ओके, यू शुड, इट इज नॉट अ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इट इज जस्ट ओनली गिवन. सो डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था बेटा? आपके पास एक डेट याद होनी चाहिए. दिस कैन बी अ 1 mark ऑब्जेक्टिव, that when demonetization was done and when GST was done. याद रखना, उसमें 30th June 2017, 1st July 2017, both are acceptable answer. And demonetization कब आया? That is 8 November 2016. ये आपका एक factual answer है. Okay, so at that moment उन्हें invalid कर दिया legal. Now उसका aim क्या था? Why we came with demonetization? So here are the aims of demonetization. First is F, to form a cashless society and cash-like society. आपने देखा ही था उस टाइम पे पेटीएम, गूगल पे, योर पर्टिकुलरली फोन पे, जो आपके इतने ई वॉलेट्स थे उनका यूज एकदम से बढ़ गया था, क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं था. वी हैव टू पे देम पर्सन. सो हमारे पास बैंक्स में पड़ा था, तो बैंक से यूपीआई के थ्रू वी वर एबल टू पे. दैट वाज यूनिक पेमेंट इंटरफेस. So Paytm, Google Pay का यूज बढ़ गया. Second, it is adding saving into the formal financial system. See, कैश अगर ज्यादा होगा तो ब्लैक मनी का पर्टिकुलर इम्पैक्ट ज्यादा आ जाएगा. अगर कैशलेस पे जा रहे हो तो वहां पे ब्लैक मनी कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी मोर चांसेस दैट वी विल बी गेटिंग टैक्स. चेक्स ऑन टैक्स इवेजन, दैट वाज द मेजर टास्क कि भैया जो टैक्स इवेज कर रहे हैं और ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस पे एक चेक आ जाएगा कि यस दैट वाज बीन डन. एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, ये एक मेजर था ताकि ब्लैक मनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट द टैक्स पेयर, और जबकि इनकम इतनी ज्यादा आ रही थी. एंड लास्ट वन इज द सॉल्विंग करप्शन. T is solving corruption. Okay, this is S. इसका ये जो short form है बेटा, that is facts. So F is for forming a cash-like society, that is for cashless, moving towards the cashless economy. Second is it is adding savings in the financial system. C is for checks on checks evasion. तो ये आपका evasion नहीं. Then is tax administration measure. It was one of the tax administration measure. And S is for solving corruption. That was the major impact. Okay. Now moving on to the next. अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, इट वाज फॉर्मिंग अ कैश लाइट इकोनॉमी. कैश होल्डिंग अराइजिंग विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकोमोडेटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट अ पेनल्टी रेट. बोला गया था कि अगर आपके पास इतना सारा कैश है तो उसे आप डिक्लेयर कर लीजिए और एक पेनल्टी रेट दे के टैक्स दे दीजिए. सेकेंड, इट वाज एडिंग सेविंग्स बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंकिंग सिस्टम bound to be withdrawn, but some of the new deposit scheme offered by the banks will continue to provide base loan at a lower interest rate. एक चीज समझो, आज अगर मुझे अपना ही कैश, सपोज if I have 500 1000 notes,
अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। अब जैसे ही बैंक अकाउंट ओपन होंगे, आपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ चुका है। मनी एंड बैंकिंग जैसे आपके इनिशियल डिपॉजिट्स या हमको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स अगर इंक्रीज होंगे, सो अल्टीमेटली ये मनी सप्लाई भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट इज द मेजर टास्क कि मनी सप्लाई आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। And that's why they were able to add saving in the formal financial system, क्योंकि at that time many accounts were being opened. अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं अबाउट जनधन योजना। बेटा जनधन योजना कब आई? जनधन योजना केम इन 2014 है। तो क्यों लाए थे गवर्नमेंट? ताकि इसमें सबसे पहला फ्री पर्टिकुलरली जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाए। बैंक में आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दे, ताकि देर इज नो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ओनली जीरो बैलेंस, मतलब आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जनधन योजना इंप्लीमेंट होने के बाद ये ले आया गया, क्योंकि बहुत सारे पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन के अकाउंट्स उस टाइम पे खोल दिए गए थे अंदर जनधन योजना। इवन ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक हमने देखा कि जो जनधन योजना के अंदर अकाउंट्स खोले गए थे, उनसे यूज करके गवर्नमेंट वर एबल टू सप्लाई द बेसिक मनी फॉर द लिविंग पर्पस। नेक्स्ट, चेक ऑन टैक्स इवेजन। सबसे पहला, कैश होल्डिंग अराइजिंग विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर, एज आई टोल्ड यू, उसको डिक्लेयर करके पे करना पड़ेगा। इट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। Now, being deposited in the banking system, bond to withdrawn, but some of the new deposits आपके सामने आ चुके हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बन गया। लास्ट, इट वाज यूज्ड फॉर सॉल्विंग करप्शन। नाउ बेटा, दिस कैन बी अ 6 मार्क क्वेश्चन एंड इट कैन बी अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप इसमें अलग रीजंस भी लिख सकते हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, बट दैट शुड बी हैविंग अ वैल्यू एडिशन। सो विद दिस हमने ये चैप्टर भी एंड कर लिया इकोनॉमिक्स का, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 3 इज आल्सो बीइंग कंप्लीटेड। सो बेटा फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, दैट इज ऑफ 12 मार्क्स, एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल। तो ये 12 मार्क्स की यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। आप सारे लेक्चर्स एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आईडी की बनी हुई है मेरे चैनल पे, सो आईडी यू कैन लर्न स्पेशली फ्रॉम दोस पर्टिकुलर videos. Chali, I'm ending the session. If you have any doubts, you can directly DM me on the Instagram, Facebook, and I'm available on Telegram also. Next, the channel, Telegram channel is also there. There you can go from in the form of owner, and you can directly message. You can directly subscribe my YouTube channel, and if you like this videos, do share with your friends, because boards आने वाली हैं, आपको ही पता है, they need this kind of videos to get it interest. Recently, I will be also telling you how to write the answers in the board. आपके लिए मैं बोर्ड की वो भी कॉपी शेयर कर लूंगा, बोर्ड कॉपी शेयर करूंगा जो टॉपर्स की कॉपी रह चुकी हैं। I will also share that board copies. I will also sharing the marking schemes. I will also share the other things that will be helpful for. चलो, so ending my session on this note. Thank you, students, for listening today's lecture.